Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So in today's video I'm going to give you a छोटा सा travel vlog as currently I'm at my hometown और मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना एक छोटा सा travel vlog दिया जाए and I will show you कि मेरे दिन में क्या क्या मैं आज करने वाली हूँ. So if you are interested then please keep on watching. Way too long, but I don't wanna come down. Caught up in a long free fall, you got me off of the ground. Sway for a minute, the plane moves side to side. I'm also going to take these aloe vera gel with me क्योंकि वहाँ पर ना aloe vera gel easily मिलता नहीं है. So I am just taking these घर का aloe vera gel. The room, I got a feeling you could be my muse. I hear strange when I see you. You say green, but I see blue. Either way, your eyes the ones I'm looking to. When I'm hell first, falling from heaven, baby. Living on the prayer that you catch and save me. I was unaware of our elevation till I looked down. All the people look like it's now high. हेलो एवरीवन. सो दिल्ली आने वाला है और अभी टाइम हो रहा है 6:45 और आपने जैसे देखा कि पूरे कंपार्टमेंट में अकेली ही थी. सो पूरी जर्नी मेरी छोटी छोटी गुजरी है एंड इट वॉज अ नाइस टाइम. मैंने काफ़ी इन्जॉय करा. AC वन का यही रहता है कि आप अकेले ही होते हो और फिर आप सोते सोते ही आपका सारा टाइम यूज़ करता है एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट होमसिक. घर की याद ऑब्वियसली आएगी ही. मैं 3 दिन से घर पे थी और अब मुझे जाना पड़ रहा है, वो भी काम करने के लिए. ठीक है, मतलब सही है, जाना तो पड़ेगा ही. जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे ना. सो या, इट वॉज ऑल द अपडेट आई हैड फॉर यू. सो आई विल सी यू गाइज व्हेन आई रीच होम. हाय गाइस, तो आई एम बैक होम और मैंने आने के बाद थोड़ा ब्लॉग नहीं करा बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड. बट एन अपडेट, आई एम गोइंग टू मेक फूड और बन चुका है यहाँ पर फूड. सो मैंने यहाँ पर पराठा बना लिया है और मम्मी ने ना मुझे घर से भिंडी की सब्जी दी थी. सो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ. ओके, सो एज यू कैन सी डिनर इज रेडी. 2 पराठास मैंने जो बनाए हैं और घर की भिंडी की सब्जी. आई हैव मेड पराठास, घर की भिंडी की सब्जी है एंड आई थिंक कि बस इतना ही था इस ब्लॉग में. बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज़ कि जैसे मैं ट्रेन से उतरी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर. मतलब ट्रेन से उतरती मुझे पता चल गया कि भाई इस बार दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है. वैसे दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम इन दिल्लीज हीट, बट लेट्स सी क्या होता है क्योंकि गर्मी तो झेलनी ही झेलनी है. एंड आई थिंक दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग. एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit that notification bell and I'll see you guys in my next video.